Hello everyone, welcome to the Change IS platform, and we are starting with our current affairs program which is going to take care of both prelims and mains. And here we'll not only discuss the news items, we'll also look at what type of questions can be expected based on the news item in your prelims mains. Okay, we'll be looking at both the aspects of the news. More recently, we have seen that UPSC is focusing on things which are recurring in the news every now and then. And it is also evident that the phenomena does not have to be linked to a single city. Even if some of the things are happening in different parts of India and are connected by single reason, you can expect a question on that in either prelims or mains. Okay, so yesterday only we have one news item which said that the Gurugram administration, the Gurgaon administration, and now which is called as Gurugram, the Gurugram administration had given a statement that they will give advisory to the corporate offices on heavy rainfall days in monsoon. Okay, and this is not something that is only limited to Gurugram or Delhi or Hyderabad, Pune, Calcutta. This is something that is happening every year with many of the cities. And this is not something which is related only to the cities which are very old, the traditional cities. But this phenomena is also taking toll on the newer cities. And hence we can expect that this question can again be there in mains. Okay, so if you want to see what exactly is happening before understanding what are the things which are creating such urban flooding events. Okay, more recently we had a question in 2020 as well on the very same topic. But if we see the case of Gurugram, okay, if we see the case of some of the cities like these, they are slightly different from what we have been seeing in different parts of India. So first let me help you with one question, okay, so that you'll have some idea of what you can expect in the exam. So here is a question based on the news item. So what kind of question UPSC can ask in mains exam? Okay, so the question says that the primary reasons for urban flooding include over-concretization, disappearing water bodies, and complete disregard to geology of the region. It means that it is blaming the concretization, it is blaming the planning process, the urban planning, that the natural factors were not taken into consideration while planning the urban centers. Okay, and this question will require you to analyze this statement, okay, and give some remedial measures with examples. Okay, and why this question has this aspect of example. Okay, you have to understand that why this aspect of example have been added into the question. The reason is, if you look at some of the questions since 2015, okay, UPSC is more or less focusing on the contemporary things that are happening. If something happened in Pune, they'll ask a question related to Pune. If something happened in Delhi, they'll ask a question on specifically Delhi. Sometimes they are mentioning the cities, and many a times we have seen that they are asking for certain examples, and the expectation of course is that you'll pick that example from the news. Okay, तो अब इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को बेसिस मान के ही हम चलते हैं ये टॉपिक लेके कि लोगों को क्या है, वर्क फ्रॉम होम मॉनसून के शुरू होते ही दे दिया गया है, जो कि अपने आप में नया है इंडिया के पर्सपेक्टिव में. एंड ऑल दिस फेनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओके, इट इज लीडिंग टू सम ऑफ द एक्सट्रीम इवेंट्स. तो आज की डेट पे जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, सम ऑफ दीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर ऑलरेडी अलर्ट दैट वी मे नॉट सी
same kind of rainfall pattern that we have been seeing for last 50 years. In some of the days, there can be more rainfall. In some of the days, there can be completely flash drought-like situation. So in this scenario, we have to analyze the news why the urban flooding is a recurring phenomena in NCR or maybe other metros or some of the second tier towns which are cropping up, which are getting bigger with time. Okay, so I'll help you to look at this news item from the perspective of Gurugram only. Okay, and we'll look at some remedy by taking some example as well, because I have already highlighted in the question that we'll be looking forward to some examples. Okay, and the other aspects on which you can find a question because of it is urban planning or maybe watershed management. Okay, so in each and every session, I'll ensure that I'm not talking only about the news, but we'll also talk about how this news item can be important for prelims, can be important for mains. Of course, realizing that some of the news items will only focus on the mains perspective and some of the smaller items will be more relevant from the perspective of preliminary examination. Okay, so here I'll try and explain what exactly is happening in Gurugram. Okay, I'll take that example and try to explain so that you can answer the question if they appear in the exam. Okay, तो अगर हम गुरुग्राम का एग्जाम्पल लेते हैं तो कुछ चीजें आपको सवाल नहीं बता दिया है. ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट आपको सवाल नहीं बता दिए हैं कि वहां कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है जो कि अर्बन फेनोमेना है, बहुत सारी जगहों के साथ आज ये है. ठीक है, और जियो हाइड्रोलॉजी या फिर जियोलॉजी की बात अगर हम करते हैं तो वो कंसिडरेशन में नहीं होता है. द रीजन फॉर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द जियोलॉजी ऑफ ए प्लेस इन एनी ऑफ द अर्बन सेंटर्स इन इंडिया इज दैट दे आर मोस्टली हैपजर्ड ग्रोथ्स. ये कैसे हैं? ये हैपजर्ड ग्रोथ है. हमारे ज्यादातर शहर जो आज की डेट पे आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, इनको प्लान नहीं किया गया था. दे आर नॉट द प्लान्ड सिटीज. ठीक है, हाफ हार्टेड प्लानिंग होती है जब लोग वहां रहने लगते हैं, जब लोग वहां जाके बस जाते हैं, फिर हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वहां दिक्कतें आती हैं. ठीक है, यूजुअली हम क्या देखते हैं कि लैंड की कमी होती है अर्बन एरियाज के अराउंड, तो हम जो पानी वाला क्षेत्र होता है, ओके, उसको हम क्या है कि ढकने लगते हैं. वहां सिल्टेशन होती है या फिर हम मिट्टी डाल के वहां घर बनाने लगते हैं. एंड द सेम केस इज देयर विथ Gurugram as well. If I talk about Gurugram, this is also a place which had more than 100 bunds. ठीक है, बंद का कॉन्सेप्ट है जो अगर हम गुरुग्राम को देखते हैं, if I talk about the example of Gurugram that is in news, okay, so there was a time where it had bunds. ठीक है, तो बंद से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है. इन बंद्स को हम क्या कहते थे? आपके बंद्स का मतलब पहले समझा देता हूं मैं, क्योंकि बंद्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत ज्यादा रहा है. दीज आर स्मॉल चेक डैम्स. ओके, बेसिकली दीज आर स्मॉल चेक डैम्स विच वेर प्रिपेयर्ड टू होल्ड सम वाटर which acted as a source of water reservoir in the time of distress, and whenever there were rains they also acted as a reservoir where all the water accumulated and which helped in the groundwater recharge and created a situation where flooding was unknown. Okay, so यहां के बंस को हम कहते थे बादशाही बंस. ओके, सो अगर आपने न्यूज को फॉलो किया है, ओके, तो इट हैज स्ट्रेस्ड इनफ ऑन इट दैट ऑल द बादशाही बंस हैव डिसअपियर्ड. और वो भी कब? व्हेन द सर्वेज इन 1970s, when surveys in 1970s highlighted their significance. Okay, highlighted their significance. Okay,
तो बंस आज की डेट में है नहीं, वो चेक डैम्स गायब हो गए हैं, ठीक है। बट ये चीजें कब से हैं? अभी यही जो सर्वे हम देखते हैं न्यूज में, जो हम देख रहे हैं, द न्यूज ऑल्सो सजेस्ट दैट देयर वाज नो फ्लडिंग इशू इन दिस रीजन एज सच in 1980s or 1990s, but after 1990, okay, the haphazard growth of the city started. Haphazard growth of the city, okay, a lot of population who were not finding habitat, okay, a cheaper habitat in Delhi used to move to that place, and they constructed their houses, many a times legally and sometimes illegally, okay, and they did not consider the drainage area, बिना सोचे समझे किया गया, okay, but after some time we know that of course urban planning started, Gurugram was organized, but सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाए गए, yes, the concretization did not allow the extra water to percolate, ये एक दिक्कत है, ठीक है। हमारे क्या है कि बादशाही बंस गायब हो गए, यानी पानी जहां जाता था वो भी गायब हो गया, तो पानी फिर जमीन पे ही फैलेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अगर हम देखते हैं गुरुग्राम का एग्जाम्पल लेते हुए, तो वो जियोलॉजी है, ओके। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू मैनेज द फ्लडिंग दैट इज हैपनिंग इन गुरुग्राम, ठीक है। तो जब हम वाटर शेड एरिया को ही नहीं समझते हैं, when we are not taking into consideration the watershed planning, then we see such problems, okay। तो इसको समझने के लिए क्या है, मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं, जो न्यूज में भी बार बार आ रहा है, ओके। बट it is always prudent to draw some diagram in exam to show the problems, okay, because they are more visible and they influence the examiner to give you more marks. They give an impression that you have a complete understanding of the thing, okay। तो न्यूज में आपने भी पढ़ा होगा, तो मैं मानता हूं कि हम गुरुग्राम को एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में अगर देखते हैं, okay, if we are looking at the Gurugram district, let's say it has an area that I have made, okay। अब इसकी मेकिंग को अगर हम नेचर ने इसे कैसे बनाया है देखते हैं, okay। So this is an area which is having the ridges, ठीक है। अरावली के एक्सटेंशन यहां आपको दिखाई देते हैं, okay। This is an area which has extension of Aravali hills, and I am showing you the area where most of the flooding event is happening, okay। So this is the area which is Delhi, connected to Delhi, and the Delhi ridge is on the eastern side, ठीक है, the extension of the Delhi ridge, and it is up to here, okay। Delhi ridge is here. Now the other ridge which is covering this thing is Firozpur, Jhikra, Delhi ridge, okay। Now this, if you look at the geology of the place, okay, and this is an area where all the flooding is happening, okay। तो यहां अगर आप देखते हैं तो नेचर ने इसे कैसे बनाया है, यमुना इज नॉट टचिंग दिस एरिया, यमुना क्या है यहां से दूर है, प्लस these two areas are like what, both these places are elevated, okay। And if you look at the natural geology of the place, you'll see that if it rains, okay, so the flow of the water is towards these areas, okay। And when there were no constructions, when naturally there were no constructions, then all the water that was moving in this direction was with these bunds that went missing. At some point in time, these more than 100 bunds were able to contain them, ठीक है। ये सारे क्या है, जो बंस है,
इनमें पानी चला जाता था, एंड मोस्ट ऑफ द एरिया नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी काइंड ऑफ फ्लडिंग। भले ये पानी यमुना में नहीं जा पा रहा हो, बीच में ही आ रहा था, बट बंस में की वजह से क्या होता था, यहां फ्लडिंग नहीं होती थी। ओके, बट उसके बाद क्या हुआ, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, दे प्लान्ड NH8, यहां NH8 बनाया गया। ऑलरेडी क्या है, ये बंस गायब हो रहे थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, because of the increasing population density, already the bunds were gone, ठीक है, they were filled and some concrete structure was built on them, and without considering this watershed area, this NH8 was built here, ठीक है। अब नेशनल हाईवे 8 यहां से बना दिया गया, दिल्ली जयपुर, ओके, दिल्ली से जयपुर जाने का रास्ता। और जैसे ही ये बना, ठीक है, तो वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ द अर्बनाइजेशन प्रोसेस और सेटलमेंट प्रोसेस एवरीवेयर, ठीक है। आपको ये पता है कि जहां भी रोड होते हैं उसके बगल में बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हुए लोग क्या है कि और भीड़ बढ़ाने लगते हैं। सो ऑल अलोंग दीज रोड्स मोर एंड मोर concrete structures emerged, okay, more concretization started, more and more of concrete structure along these roads, but this depression is here to stay. अब ये जो डिप्रेशन है, दोनों तरफ क्या है, अरावली रेंज है, ठीक है, फिरोजपुर झिकरा एक तरफ और दिल्ली रेंज एक तरफ। तो जितना भी पानी आ रहा है, जो भी बारिश हो रही है, all the water is still trying to flow to which area? It is still flowing to this area, okay, still the movement of the water is in this direction, and this is the reason that this city is seeing recurring floods each and every year. तो अब इस चीज को अगर आप समझते हैं तो क्या होगा, the water will get deposited in this area. थोड़ी भी बारिश होगी तो क्या होगा, पानी यहां जमा हो जाएगा, ओके। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई है, हम इसमें बहुत बदलाव नहीं कर सकते हैं। क्यों? NH8 को हटाया नहीं जा सकता है, अरावली को हटाया नहीं जा सकता है, इसे तोड़ के यमुना में पानी को पहुंचाया नहीं जा सकता है, दैट इज ए कम्बरसम जॉब। और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, but still any of the city you have to understand that there are lot and lot of places, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां क्या हो रहा है, जहां पे अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। some of the green areas are there and not all bunds are gone, okay, some of the bunds are still there but because of siltation उनकी डेप्थ कम होती जा रही है, okay। तो इसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको अगर हम रिजॉल्व करने की बात करें तो इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिंगापुर में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो आपको पता है, ठीक है, कि बेटर प्लानिंग, बेटर ड्रेनेज सिस्टम, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। नालियों को ठीक किया जाए, ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए, चौड़ी नालियां बनाए जाएं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज पे ध्यान दिया जाए, क्लियरेंस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ऑल सच थिंग्स आर प्लॉजिबल, you cannot solve this problem if the water cannot flow out. ड्रेनेज में भी जो पानी जाएगा वो स्लोप को ही फॉलो करने वाला है, ठीक है। even if you make underground drainages, the water will definitely go there but it will stagnate, because if we look at the geology of this area, this is a depression. ये दोनों हिस्से ऊंचे ऊंचे हैं और ये जो बीच का हिस्सा है वो नीचे दबा हुआ है, तो पानी वहीं जाएगा। सो व्हाट कैन बी ए ग्रेटर सॉल्यूशन टू दिस थिंग, ओके। सो टू फाइंड द राइट सॉल्यूशन वी हैव टू लुक एट व्हाट सिंगापुर इज डूइंग, ठीक है। तो हम एक, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया था, वी टॉक्ड अबाउट एग्जाम्पल, ओके। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है, या तो वो डायरेक्टली क्या है कि जो उसे सिटी चाहिए उसका नाम दे रही है,
ताकि आप उससे रिलेट करके बता पाएं, या फिर वो आप ही से एग्जाम्पल मांग रही है? तो जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ अर्बन प्लानिंग जो कि ज्यादा पॉपुलर हैं. ओके, बट टू पुट द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव वी हैव टू लुक एट द सिंगापुर मॉडल. ठीक है, everybody knows that it is one of the busiest city of the world, very high density. Okay, but what Singapore has done, Singapore recognized this problem very early. ठीक है, उनको पता था कि शुरुआत में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो काफी हद तक इन सिस्टम्स को मारती जा रही है. ओके, most of them are killing the natural reservoirs of water. तो इन्होंने क्या किया, they decided to create 30 reservoirs in the city. ठीक है, they created 30 reservoirs in the cities. water reservoir, water bodies, ठीक है, आप इनको, और water bodies, इनका काम क्या है? इनका काम है टू एब्जॉर्ब द एक्सेस वाटर दैट इज फॉलिंग थ्रू द कॉन्क्रीट्स एंड नॉट फाइंडिंग द पैसेज टू रीच अंडरग्राउंड. ठीक है, तो उस चीज को रिप्लेस करने के लिए इन्होंने 30 वाटर बॉडीज क्रिएट किए. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट टुडे, 65% ऑफ द रेन वाटर, 65% of the rain water or surface runoff reach these water bodies. Okay, and the city is seeing a lot lesser flooding event if we compare the situation 20 years back, 15 years back. Okay, और इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया है, the Singapore model is more attractive. Why? Okay, because they have plans of harvesting 90% of the rain water by 2035. Okay, they have plans for harvesting 90% of the rainwater by 2035. It means that they are not only focusing on checking the flooding events, the discomfort that it causes, or maybe the losses that it is creating, but they recognize the value of this water. They know that the water scarcity is going to be a big challenge in the future. Okay, so they have started with a model that is focusing on harvesting 90% of the rainwater, all the surface runoff that is happening in the city of Singapore. Okay, अब इसके अलावा क्या है कि आपने जब ये मॉडल देके, एग्जाम्पल देके आपने बताया कि ऐसी चीजें हैं, नाउ वी हैव ए सॉल्यूशन. आप जानते हैं देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज दैट आर इन द कंट्री विच वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम ऑफ द गुड मॉडल्स आउटसाइड आवर कंट्री. ठीक है, हम बहुत सारी चीजों में इजराइल से इंस्पायर हुए, हम बहुत सारी चीजों में यूएस की अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए. सो व्हाई नॉट अडॉप्ट सम मॉडल which can actually help us to remove this menace of urban flooding, where we can take care of the water, where we can take care of the people, where we can take care of the daily needs of the urban centers. Okay, तो अगर इन चीजों को हम करते हैं, सिंगापुर मॉडल से हम सीखते हैं, तो विल बी इन ए पोजीशन टू रिड्यूस सच फ्लडिंग इवेंट्स. ठीक है, ये बहुत हद तक कम हो जाएंगे. और फाइनली क्या है, वाटर सेड प्लानिंग को गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए. दे वर फोकसिंग दिस थिंग सिंस द 5th 5-year प्लान,
अगर हम देखते हैं तो 5th 5-year प्लान से ही ये चीज करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, बट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ वन रीजन और द अदर, ओके, बिकॉज ऑफ द coordination failures between the departments, some of the state departments coordination failure with the center, okay, probably we are seeing this problem because these things are pretty well being managed by some of the existing cities and they are on their way to become resilient cities of the future, right? तो हमें भी वैसा ही बनाना है और ये मॉडल अगर हम देखते हैं तो हम सारी सिटीज में जहां की क्या है कि जियोलॉजी की प्रॉब्लम है, कॉन्क्रिटाइजेशन की प्रॉब्लम है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की प्रॉब्लम है, वी कैन इंप्लीमेंट दिस थिंग, ओके. So this is going to be our approach with most of the news items. In this news item, of course, we did not venture into some of the things that can be asked from prelims perspective. लेकिन बहुत सारे न्यूज ऐसे होंगे जहां हमें दोनों पर्सपेक्टिव होगा. विल लुक एट द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, विल लुक एट द मेंस पर्सपेक्टिव. Okay, so in the next lecture I'll try to come up with, in the next segment I'll try to come up with some news item which will give you better perspective of the ecology and environment, better perspective of geography in order to tackle all the questions that UPSC is going to ask in prelims and mains. Thank you.